गाइस एक बार ये एम्बुलेंस देखो, ये एम्बुलेंस 7 से 8 फुट की एम्बुलेंस है। मैंने आपको दूसरा एंगल भी दिखाया था जहाँ दो एम्बुलेंसेस आपस में अटैच थी, मैं वो भी अब आपके लिए पोस्ट करूँगी। बट आप बता सकते हो ये लोग कितना भाग के जा रहे हैं। ये चीज़ तो प्रूव हो चुकी है कि दिशा क्यों मरी थी, क्योंकि वो एक माइनर लड़की को उस पार्टी से बचा रही थी जिसको मोलेस्ट किया जा रहा था। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस और एक्टर्स मिलके कर रहे थे। एंड आप देखोगे कि वहाँ उस दिन जो कूपर हॉस्पिटल है उस दिन 2 एम्बुलेंसेस आई, ये हम सबको पता है। एक एम्बुलेंस में तो 7 से 8 फीट का लंबा स्ट्रेचर जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, और ये स्ट्रेचर आप देखेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी 2 बॉडीज थी। तो एक्चुअली में 2 से 3 मौतें हुई हैं उस रात को। एंड इस वाली में मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें क्लियरली आपको बच्ची दिखेगी। इसमें आप देखें ये रेड सर्कल जो मैंने किया हुआ है, इसमें आपको ये बाल लटके हुए दिखेंगे। तो इतने लंबे बाल तो सुशांत के नहीं थे। और ये हाथ भी देखिए, बिल्कुल चिकने जैसे बच्ची के हाथ होते हैं, ऐसे ये हाथ हैं। तो ये दूसरी एम्बुलेंस भी गई है। और अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा 2 एम्बुलेंस। अब जहाँ ये एरो दिखाएंगे वहाँ आप क्लियरली देखना, 2 आपको एम्बुलेंसेस आपस में मिलती हुई दिखेंगी, लाइक जॉइंट्स दिखेंगे 2 एम्बुलेंसेस में। सो बेसिकली ये 2 एम्बुलेंसेस हैं अलग अलग और इनको जोड़ा गया। ये देखो आपको गैप दिखा, गैप क्लियरली शो कर रहा है। आप देख के मुझे नीचे कमेंट करो और बताओ। The question is, Ravi, you're not involved. No, I'm just verifying. You're not involved. No, what happened? So why are you getting so worked up? So Neelam Katara is on the debate. Can you allow me for that? Neelam Katara is on the debate. I want to show you. I want to show you video 4. Video 4. Producers, can we play it, please? Thank you. Video 4, viewers, is on the screen. People like Shoaib Chaudhary should look at this closely. People like Shoaib Chaudhary who come on these programs and take a position without having the facts should look at this closely. Look at it closely, Shoaib. You can see the ambulance doors open. The stretcher is being brought out. Now watch, the ambulance is taken in. You can see what appears to be the head of the body and then the part towards the feet as the stretcher moves. But now look, the wheels of what appear to be another stretcher are seen. And as the stretcher whizzes by, the man in the white shirt steps in to ensure the process is blocked from vision. That means there is a second stretcher, Neelam Katara, without a doubt. Without a doubt, Neelam Katara, there is a second stretcher, we've proven it. And then, to hide the second stretcher from being captured by the media, a human chain is built, people are blocked. Now, why was there 1 stretcher taken out of the ambulance or 2? Now, if there were 2 stretchers taken out, what was the second stretcher for? And if the second stretcher was empty and there is nothing suspicious, why was there so much panic to ensure that nobody gets a shot of the second stretcher? It's really, it's unfathomable. Why should a second stretcher be there at all? And if it was there, like I think one of the drivers or somebody said that a stretcher wheel broken, so we had a second one, but then they didn't need to stuff it into the ambulance and bring it. So it's very difficult to figure out why it should be there and why was it being taken right into the hospital. This is something which is completely beyond. And then again, why are so many people trying to, cover it up? And where is Sandeep Singh now? He is not standing there and supervising where the stretcher is going. Precisely. So he's been there all the while, but he's not there where he should be there if he's taking care of things. Look at this visual evidence. Shoaib is looking a little uncomfortable today.